जूनागढ़ पाकिस्तान है, जूनागढ़ इस पाकिस्तान के उन्वान से गुज़िश्ता रोज़ लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के सब्ज़ारों में वाक़या खूबसूरत होटल में तारीख़ी अहमियत के हामिल एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद इंतहाई दिलकश और पुरवक़ार तरीके से किया गया। चेज़ न्यूज़ यूएसए के बानी और स्पेशल असिस्टेंट टू नवाब ऑफ जूनागढ़, फाउंडर न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन एंड सांझा पंजाब सैयद अलमदार हुसैन शाह की ज़ेर सदारत मुनक्कद होने वाले इस इवेंट में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, फैमिलीज़ और मुकामी अमरीकी सियासतदानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सैयद अलमदार हुसैन शाह और सीनियर जर्नलिस्ट कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत बशीर कमर ने जूनागढ़ की तारीखी अहमियत और जूनागढ़ पर इंडिया के 75 सालों से नाजायज़ कब्जे के हवाले से तफसीली रोशनी डाली। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जूनागढ़ की हिस्ट्री के बारे में हम नहीं जानते, मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन सुना हुआ था कि जूनागढ़ कोई जगह ऐसी है जो कि इंडिया में है और कभी पाकिस्तान का हिस्सा थी। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हमारे जो आज के ये स्पीकर्स हैं इंशाल्लाह ताला ये आपको उस पर रोशनी डालेंगे। मैं सबसे पहले जनाब सैयद वसीम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आज हमारे आए हुए मेहमान का तारुफ करवा दें। I wanted to introduce John Kamen. Currently, he's the Deputy County Executive, Suffolk County, and now he's running for Congress, District 3. Thank you, Syed, and thank you for giving me an opportunity to speak here tonight. I know that I have many friends in the room. And so my name is John Kamen. I'm going to step back a little bit. My name is John Kamen. I've been an elected official. I've served in government. Some of you may have remembered I was North Hempstead Town Supervisor, which is Great Neck, Manhasset, New Hyde Park. I've also worked for Governor Cuomo for several years. I was oversaw NIFA. I was chairman of NIFA, the Interim Finance Authority. And I work right now for County Executive Steve Ballone. I'm a Deputy County Executive. We run a $4 billion government. And the job that I do, what I am responsible for, is making sure that government works. I work with the police. I work with the Social Services Department. I work with the Human Resources Department. And what we found is that in Suffolk County, similar to Nassau County, we need to go out into the community and bring people together, because the divide in our country is so great. And right now, everybody is looking for somebody else to blame for what's wrong. And so maybe what we need to do is rethink how we look at each other. And here for a Human Rights Watch, where we know that people are judged based on the color of their skin, what they're wearing, what their accent is. We know that they're not just judged, but people are hurt, they're abused. People are doing things that we wouldn't countenance, we wouldn't respect, and yet somehow people think it's okay to yell things, to say things, to do things. It's a violation, it's a disrespect. And so we in government, those who lead, those who are responsible, need to step forward and say, it's not okay. I can stand here with my friends and be proud that you are my friends, that we are here together in this country, that we are part of this county, of this state, of the United States. We are here because we believe in something greater than ourselves. We believe in the American dream. We believe that it's based on who we are inside and what talent we bring. And we love our families and we love our communities. And we have a right to be safe. And we have a right to be respected. And we have a right to live in dignity. And so I am running for Congress because I've served in local government. I've run local governments. I've served in the state government at high levels. And now I am running for Congress so I can go to the federal level and help try to bring the divide together. As a Democrat, I need to show up and say we need to be safe, and we can't go off the ledge and be extreme and give up on police. We need to work with police. But we also have to work with those and make sure that everyone's treating everyone else fairly and with respect. And so I won't go on. There's a lot of important issues. I know that human rights is a critical issue. I did actually recently have a chance to study human rights. I took a human rights course at Harvard University recently and studied literally human rights at the highest level. And I hope that that experience will give me a greater ability to work with you and help organizations such as this
so that we can make sure that human rights are part of everyone's vocabulary, and that we will work together and make the world safer for all of us, but also a place where we can be proud of who we are together. So thank you so much for giving me the chance to speak to you tonight. मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अलमदार शाह साहब का, जो कि एडवाइज़र टू नवाब जहांगीर खान साहब है, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे रियासत जूनागढ़ के हवाले से कोई बात कर सकूँ। हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी, जिनमें से 5वीं अमीर रियासत जूनागढ़ थी। इस जमाने में अंग्रेज बहादुर का राज था जूनागढ़ में, और सारी रियासतों को ये आज़ादी थी कि वो अपना निज़ाम खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ चलाए। रियासत जूनागढ़ मुगलिया सुल्तनत के जरनैलों ने कायम की थी, जो 1730 में वजूद में आई, लेकिन उसके वजूद में आते ही बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मसाइल शुरू हुए। हिंदुस्तान रियासत जूनागढ़ के पहले नवाब हुक्मरान बहादुर खान साहब या शेर मोहम्मद बहादुर खान साहब थे। उन्होंने 28 साल तक रियासत के अमूर निभाए, और दूसरे नवाबों मोहम्मद खान जी, मोहम्मद रसूल खान जी, मोहम्मद मुहब्बत खान जी, और ये सब नाम आपको ये जाहिर करते हैं कि ये इनका ताल्लुक पठान कबीले से था। गुरमल स्टेट थी, उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, उन्होंने इसलिए किया कि उनको हिंदुस्तानी क़यादत ने ये मौका फराहम किया कि भाई आप ऐसा करें, आप आज़ादी का ऐलान कर दें, ताकि यहाँ पे रियासत जूनागढ़ को कमज़ोरी नसीब हो। दोस्तों, जूनागढ़ पर जब पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था और ये सारा कुछ मुमकिन हो गया, तो हिंदुस्तान ने उनके हालात सख्त तंग कर दिए। रियासत में अफरा तफरी और बेचैनी फैल गई। हिंदुस्तानी लीडरशिप धौंस धांधली पे उतर आई, और उन्होंने हिंदुस्तान के उन इलाकों के जो रूसा थे, जो करीबी लोग थे, उनको उकसाया, और फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम पाकिस्तान के साथ आपका इलाक़ कबूल नहीं करते, लेकिन आप ऐसा कि आप यहाँ पे रेफरेंडम करवा लें। नवाब साहब ने, सच्चा नवाज भुट्टो ने और बाकी दीगर लोगों ने उसका इनकार किया कि हमको यहाँ पे रेफरेंडम नहीं करवाना, क्योंकि जब फसादात हो गए थे तो अगस्त के बाद सितंबर के महीने में लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तजवीज़ दी कि यहाँ पे आप रेफरेंडम करवा दीजिए। तो आपने जब यकसर मुस्तरद कर दिया तो वहाँ पे फसादात हो गए। आपको पता है कि वहाँ पे अगर रेफरेंडम होता तो क्या होता, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी दो करीबी रियासतें थी, वहाँ पे तो पहले ही बगावत हो चुकी थी, और उन्होंने अपने खुद मुख्तारी का भी ऐलान कर दिया था। मुसलमान वो जगह छोड़ के जा रहे थे, वहाँ से निकलने से चूंकि उन पर जमीन तंग कर दी गई थी। और आखिर ये हुआ कि 4.5 महीने बाद 20 फरवरी 1948 को हिंदुस्तान की मौजूदगी में वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें रियासत की अक्सरियत ने हिंदुस्तान के हक में वोट डाला, और इस तरह रियासत हिंदुस्तान का वो हिस्सा बन गई। इन नताइज को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कुल्लम-कुल्ला करारवर्जी करार दिया गया। डेली टेलीग्राफ और रोजनामा डॉन पाकिस्तान ने उसे मंजूर नहीं किया, पाकिस्तान हुकूमत ने मंजूर नहीं किया, और वहाँ पे जितने भी लोग थे जो मुबस्सरीन थे, उन्होंने उस रेफरेंडम को मुस्तरद कर दिया। और हर कोई अच्छा काम हो या कम्युनिटी को इकट्ठा करना हो, तो मैंने हमेशा देखा ये करते हैं कि जो कि बहुत बड़ा अच्छा काम, और ये मेरे शहर से भी हैं। और सबसे बड़ा न्याजी ब्रिज मेरे सके नाना जी के नाम पर है हमारे साहिवाल में, क्योंकि हम मुस्लिम लीगी हैं और मैं पाकिस्तान के बाद बनने के बाद यहाँ पैदा हुआ। और अब लाहौर में फ्लाई ओवर मेरे सगे माम के नाम पर, मुनीर न्याजी के नाम पर वो उसको नाम दिया गया। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि आफ्टर ऑल उन्होंने उन्हें रिकग्नाइज किया।
तो इसके साथ ही बात को ख़त्म करता हूँ। तो आमिर शाह साहब एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मैं मंजूर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, हमारे एक और दोस्त आए हुए हैं तो उनका पहले तारुफ करवा दें। Thank you very much and good evening. Assalamu alaikum. I'm really honored that Shah Sahab ordered me to introduce another gentleman, but at the same time I'll say that where when the world, the globe is showing support to this and solidarity with the Kashmiri brothers and sisters, which is being occupied with the so-called Indian democratic state, which is a so-called, I always say so-called democratic state of India. At the same time, Sayyid Alamdar Hussain Shah Sahib is introducing to this August gathering a very important issue of Junagadh state, which is also a black scar on the face of so-called Indian terror, Indian occupied forces, shows their brutality in held occupied Kashmir. So here Shah Sahib asked me to introduce another guy, a very noble and honorable person from Brooklyn. He is the CEO, Chief Executive Officer of Bridge Multicultural Advocacy Group and the CEO of Bridge TV, Mr. Meyer Appel. Thank you very much, Mansoor. Thank you, Shah, for putting this event together. Human rights is priority, number one priority in the world today. We cannot allow, I've been Googling what's been going on in Kashmir, what's been going on in some of the province of India, and what's been going on there, the rapes, the murder, the mutilation. That's just not unacceptable, totally unacceptable. We are here tonight, we're here, we should be in front of the United Nations, we should be screaming, because this is an act that should not happen in this century of America. Many of you know me from Brooklyn, Mansoor, know me, many of you have been, I happen to be of Jewish faith, but I think I have, by now I should have some Pakistani blood in me. I've been to more Pakistani events than I've been to synagogues this year. So I'm an honorary Pakistani citizen, and I'm so proud of all the work that you guys do in Brooklyn, Queens, Long Island. And I know that John Kamen, who's here, I had just a chance to meet him for the first time about 10 minutes ago. And I went to the back and I made 2 phone calls. And both calls said John Kamen is number 10. When it comes to unity, when it comes to diversity, when it comes to bringing the people together. And you telling me that the district comes all the way from New Rochelle, all the way down to Great Neck, all the way down to the Bronx, all the way down to Queens. I mean, I think that's probably the longest congressional district in the state of New York, right? And I'm available to support you, and I'm sure that this community is going to give you a support as the next congressman from the Suffolk County. But again, it's very important. We're here tonight for a cause for civil rights in these territories that people are being tortured, women are being raped, children are being hurt, and that's totally unacceptable. And anything I can do, anything I can do. We did this in the Bronx, we did this for Yemen, we did this many, many times that we got together in Brooklyn, 9 to 12 different organizations, and every nationality's got to be involved in this. We can't limit it to, even though this is the Pakistani community is prioritized this, but every community should be addressing this issue. Issue of genocide in this generation is just totally unacceptable. So God bless you for doing this work. God bless Mansoor and all of you that work constantly for civil rights, for justice in a great nation, the United States of America. God bless. Thank you so much. I'm honored to speak about Junagadh, and I take this opportunity to say something about it. I went into the research and looked forward for more facts about it. And then I realized that Junagadh, when Pakistan was created, Junagadh was given the authority to choose either Pakistan, or they can be India, or they can rule on their own. And they have given 3 options for that. They chose Pakistan. It's my proud privilege to also address
His Highness Nawab Jahangir Khan, the Nawab of Junagadh, in absentia. Out of many states under Indian occupation, Junagadh Kathiawad was one of the states we grew up studying in schools and colleges. As well as this was one state which was known to us while we joined the army as one of the most strategic naval, I would say, high grounds in the Indian Ocean. I would like to start off with referring to a verse from the Holy Book of Quran in which Almighty God talks about standing up for justice. He says to promote justice wherever and whenever. And as an American-born Pakistani Muslim, learning about Junagadh was a surprise. I didn't even know it existed until this event came up. So this reminded me of a quote from Martin Luther King Jr. in which he said that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So if we want to serve justice, we have to do so regardless of race, color, or faith. So now back to the topic of Junagadh. After the documents were signed by the Nawab of the time, they have been dishonored by India. So now it is a wonderful step that we all have come here and we have raised our voices to talk about this matter. John Cayman, the Deputy Executive, County Deputy Executive is with me. Welcome to Global and the International newspaper and TV channel. Please tell us about yourself and your kind presence in this mega gathering. Yeah, so I'm John Cayman. I'm actually a former town supervisor here. I used to represent about 230,000 people here on Long Island. I worked for Governor Cuomo for several years after Sandy to help fix Long Island after Superstorm Sandy, and now I'm Deputy County Executive in Suffolk County. We have about a $3.5 to $4 billion budget, and I work with Steve Ballone. But now I'm actually here because I'm running for United States Congress. I've been an elected official. I've served in public. I've had a lot of different roles, but I'm here because I have a lot of friends here, and the Pakistani, the Muslim, the communities that come here that have been friends of mine for a long time. We've solved problems together. We've had some meals together. Sometimes a little spicy. It's not so bad, but it's wonderful. And so I'm really here to meet my old friends and learn again what are the issues of the day and present myself so that I can make sure that I help. I know that throughout the world and I know in Pakistan and other communities there's issues that we need to address. There's a youth bulge. There's issues in terms of defense. There's geographic issues. We need to work together. There's economic issues, environmental issues. We need to be partners, and I can do that from Congress. I've done that locally, but now we need to do that nationally, and I'm looking forward to being able to do that with my friends here. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल अकबर। बड़ा अच्छा इवेंट है आज यहाँ पर। सैयद अलमदार साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और ये जूनागढ़ के हवाले से ये इवेंट है, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इससे कॉज के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसके जो जायज़ हक़ है जो जूनागढ़ की फैमिली और जूनागढ़ वालों की जो असासे हैं वो मेरे ख्याल से उनको देना जाना चाहिए। इंडिया ने जो उसको ज़ब्त किया हुआ है या जो उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के इवेंट होंगे तो उन पर प्रेशर भी पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये हासिल करके ही रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से सब लोगों को, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और मुझे और एक और चीज़ का बड़ा अच्छा मुझे गर्व हो रहा है कि दुनिया चैनल जो है मुझे इस पर रिकॉर्ड कर रहा है और मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ, कैंडल योगा डांस मास्टर। पाकिस्तान की काफ़ी मूवीज़ में एज ए कोरियोग्राफर मैंने रीमा जी, ज़ेबा बख्तियार साहिबा, अंजुमन पुरानी माशाल्लाह से, मुसरत शाइन, ये सब को मैंने कोरियोग्राफ किया है फिल्मों के हवाले से और एज ए सिंगर। और मेरी जो ख़ास स्पेशलिस्टी है वो है कैंडल योगा डांस। ये आप देख रहे होंगे ये बाल, ये मैं आई एम कैंडल योगा फर्स्ट कैंडल डांस मास्टर पाकिस्तान और 40 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ ये और वर्ल्ड में जाता हूँ, चाहे रशिया हो, जापान हो। लेकिन आज मुझे खुशी हुई है इस इवेंट में आकर जो कि सैयद आमी शाह साहब जो ये अरेंज किया है जूनागढ़ के हवाले से, और मेरी भी उनके साथ दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके ये जो मसले हैं जूनागढ़ के जो प्रॉब्लम्स है ये क्लियर होनी चाहिए
اور جو غیر قانونی طور پر جو اتنا زیادہ ان پر ٹینشن جو دباؤ ہے جوناگڑھ کے حوالے سے وہ ختم ہونی چاہیے اور پیار محبت سے یہ مسئلے حل ہو، کیونکہ ہم آرٹسٹ ہیں اور ہم پیس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ میں پاکستان کے حوالے سے ہوں اور پاکستان میری رگ رگ میں ہے، تو جہاں دنیا، کیونکہ دنیا تو دنیا ہے، دنیا میں ہر جگہ آرٹسٹ موجود ہیں، تو میری طرف سے آپ کے چینل کو بہت بہت وش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور ہم جتنے آرٹسٹ ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ترقی دے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.